तो प्लूरल सिंगुलर फॉर्म आम खाली पढ़ी सारी आज आम आमर जो कोर्स रे अच्छे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आमर जो इनविटेशन टू इंग्लिश 4 जो चैप्टर रहा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आज से काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन विषय रे डिस्कस करवा आम ठीक अच्छे सो countable noun and uncountable noun ठीक अच्छे ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन आग को जीवा आगु मु तुमको गोटे जिनस खाली क्लीयर करदेवाई चाहूँगी नाउन रो गोटे जिनस रहा जेंडरटा नाउन रो जेंडर विषय में कही नहीं आम नाउन रो नंबर विषय पढ़ले जेंडर विषय भी टी जानवा आवश्यकता अच्छी जेंडर विषय सो इन इंग्लिश इंग्राजी रे देर आर 4 जेंडर इंग्लिश नाउन हैज 4 जेंडर जेंडर कहले लिंग पिले जो तरे तो जेंडर डेफिनेशन जदि आम देखा द डेफिनेशन ऑफ जेंडर कैन बी described as gender is the formula in which or by which we can divide the noun as a male or female गोटे मेल कि फीमेल हिसाब से जो आम भाग करवा से जो प्रक्रियाटा रोचे आम जेंडर बोली कहवा बा लिंग निरूपण बोली कहवा ठीक अच्छे तो नाउन हैज 4 जेंडर नाउन हैज 4 इंग्लिश नाउन स्पेशली इंग्लिश नाउन हैज 4 जेंडर कौन कौन व्हाट आर दोज 4 जेंडर लेट मी टेल तापर आम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन डिस्कस करवा सो जेंडर ऑफ नाउन जदि आम देखा नंबर 1 हूँ तुम मैस्कुलिन जेंडर MASCULINE मैस्कुलिन नंबर 2 हूँ फेमिनिन FEMININE फेमिनिन देन नंबर 3 इज कॉमन जेंडर एंड नंबर 4 इज योर न्यूटर जेंडर NEUTER सो दीज आर द 4 जेंडर इंग्लिश रो 4टा जेंडर गोटे है मैस्कुलिन आ गोटे फेमिनिन आ गोटे कॉमन आ गोटे है न्यूटर तो एमानकर ओडिया जदि आम देखा मैस्कुलिन कहले पुलिंग देन फेमिनिन कहले स्त्रीलिंग एंड कॉमन कहले साधारण माने उभय यू कैन से उभय एंड न्यूटर कहले क्लीबलिंग न्यूटर कहले क्लीबलिंग ठीक अच्छे तो ये पे मैस्कुलिन कहले पुलिंग मैस्कुलिन स्टैंड फॉर मेल इन शॉर्टकट यू कैन से मैस्कुलिन स्टैंड फॉर मेल फेमिनिन स्टैंड फॉर फीमेल एंड कॉमन जेंडर स्टैंड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एंड न्यूटर जेंडर स्टैंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स ठीक अच्छे फॉर एग्जांपल मैस्कुलिन जेंडर कहले मैस्कुलिन हूँ जमीती यू कैन से मैन son then you can say brother father these are masculine gender पुरुष मान को सूचाए जोटा ठीक अच्छे से भाया फेमिनिन कहले जमती आम जानी फेमिनिन कहले कौन कौन हवा फेमिनिन कहले तुम जमती मदर सिस्टर डॉटर ग्रैंड मदर ठीक अच्छे दीज आर व्हाट योर फेमिनिन जेंडर तापर आम जदि कॉमन जेंडर को जीवा इफ वी लुक एट कॉमन जेंडर रे कौन हम कॉमन जेंडर रे जमती टीचर कहले आम तो कहूना ना लेडी टीचर कि जेंट्स टीचर बोली कहे कि टीचर स्टूडेंट प्लेयर दीज आर डॉक्टर दीज आर कॉमन जेंडर एमाने होचंती कॉमन जेंडर यस चिल्ड्रेन आल्सो यस मानस सेही भलिया आम जदि न्यूटर जेंडर को जीवा न्यूटर जेंडर जमती मु एठी चॉक इज योर न्यूटर जेंडर then eraser is your neuter gender book is your neuter gender shirt is your neuter gender pen is your neuter gender ए सब कौन न्यूटर जेंडर क्लीबलिंग माने जो मानकर जीवन नहीं से माने यू कैन से द थिंग्स वस्तु ए जिनस सब एमाने होचंती को जेंडर न्यूटर जेंडर तो एटा थिला लिंग जेंडर तो वर्तमान जीवा पिले हमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को तो पिले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन काउंट सिंपली आम जब देखा काउंटेबल कहले जो नाउन को आम गणी पारिबा काउंट कहले गणिबा
So all the student, may I request all the student to like the class को like कर पिले. So कौन अच्छी countable कहले जोड़ा गणी होबो जहाँ को हमें गणी पारिबा ठीक अच्छी countable. ଆଉ uncountable कहले कौन बिले uncountable कहले जोड़ा गणी होबो नहीं जोटा गणी होबो नहीं सेटा होची uncountable. ठीक अच्छे पिले. So countable nouns are those nouns that can be counted and uncountable nouns are those nouns that cannot be counted. So if you look at the book's definition, जदि बही रे थिबा definition को देखिबा हमें ताले कौन होबो countable nouns are those nouns which can be counted and also published as a unit. ठीक अच्छे. So countable nouns are those nouns that can be counted and also published as a unit. And uncountable nouns कौन uncountable noun होची uncountable nouns are those nouns which cannot be counted and also can be published as a unit. गोटे unit हिसाब रे हम ताकू कहि परिबा नाही आउ countable noun टाकू गोटे unit हिसाब रे भी कहि परिबा एवं गणी परिबा. ठीक अच्छे पिले. वर्तमान कथा रहिला लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन. जेमिति काउंटेबल नाउन अच्छा बहुत सहज प्रक्रिया वेदर नाउन इज काउंटेबल और नॉट इफ यू वांट टू नो इट जदि आमे जानिबा चाहू से जे नाउन टा काउंटेबल ना अनकाउंटेबल वेदर द नाउन इज काउंटेबल और नॉट इफ यू वांट टू वेरीफाई इट then we can take an example like the shortcut. I'm telling the shortcut. What happens? Look at this. Suppose cat is there. Cat. This is an example of countable noun. तो मु केमते जानिबे एटा काउंटेबल ना नहीं. So simple, so easy formula. जदि एस जो नाउन रे प्लूरल कला बेले हम एस लगे प्लूरल करि पारुचे those nouns are countable. मन रहा जमती मु कैट को कौन करी कैट्स लिखिदेवी बट three cats yeah grammar yes 3 cats. If I'll write 3 cat no it's wrong, so it would be 3 cats. So this is what countable. but मु वर्तमान ने भी वाटर कहले कौन पिले पानी. वाटर को मु वाटर्स करी पारिबी कि लिखि पारिबी कि वाटर्स बोली लिखि पारिबी नहीं. दैट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल. एटा कौन अनकाउंटेबल. तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हैला काउंटेबल बोली जानिबा केते बेले जेते बेले इफ वी कैन द नाउन कैन टेक एस. If we'll put s or es with the noun, if the noun agree, that is countable, and if the noun don't agree with s or es, that is uncountable. So simple. तो से भलिया किछि एग्जांपल आमे जदि देखिबा किछि उदाहरण आमे जदि देखिबा जेमति ब्रेड तापर मिल्क ब्रेड टा भी पिले ब्रेड टा भी मन रखिया ब्रेड टा भी अनकाउंटेबल नाउन. से बड़े ग्लास पेपर ग्लास देन पेपर आउ कौन आउ अच्छी जमती नहीं पार तुम कौन आउ गोटे या भितर आउ किछि रहिला पिले जमती यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक एनी प्लूरल फॉर्म्स एक्सेप्शन इन सम स्पेशल केसेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू राइस फ्लोर rice through floor होची rice floor. So these are all what uncountable noun. तो वर्तमान देखिबा तार यूज सब आमे जानि गले यू अनकाउंटेबल नाउन आ काउंटेबल नाउन कोन. वर्तमान आमे देखिबा द यूसेज तार व्यवहार सब कोठी रोची. साउंड प्रॉब्लम इज देयर. आई डोंट थिंक साउंड प्रॉब्लम इज देयर. Now let us go to the usage व्यवहार usage of countable noun uncountable uses of countable and uncountable noun.
काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन रो व्यवहार वर्तमान देखिबा। तो प्रथम कथा पोस्टली द क्वांटिफायर्स परिमाण सूचक शब्द सब क्वांटिफायर्स कहले परिमाण सूचक शब्द क्वांटिफायर्स सच एज सोम ए लिटिल देन a lot of etc are used with uncountable noun क्वांटिफायर्स अनकाउंटेबल नाउन सहित क्वांटिफायर्स व्यवहार हुए। क्वांटिफायर्स कहले कौन कहली मु तुमको परिमाण सूचक शब्द क्वांटिफायर्स कहले क्वांटिफायर्स लाइक यू कैन राइट QUANTIFIERS क्वांटिफायर्स परिमाण सूचक शब्द लाइक shown a little then a lot of these are all quantifiers these quantifiers are used with what yes uncountable noun मन रखिबा अनकाउंटेबल नाउन रो क्वांटिटी जणेबा पई आमे कोन व्यवहार करथौ क्वांटिफायर सब व्यवहार करथौ लाइक सोम ए लिटिल देन ए लॉट ऑफ। फॉर एग्जांपल जदि नेबा हम जदि उदाहरण देखिबा पिले कोन हबो जेमति मदर गेव मी सम मिल्क मदर गेव मी सम मिल्क इट मु कौन कहली मिल्क आगु कौन लगेली सोम लगेली मदर गेव मी सोम मिल्क सो या I can say that milk is your uncountable noun. Another example, can you borrow a lot of rice from your mother? Yes, a few is also a word that can be used for both singular and plural nouns. That can be used for both countable and uncountable nouns. A few can be used. I'll give you example. About this. So here what happens? The above denotes okay. So here is shown the rounded words is your quantifiers and these are used before what? Before uncountable nouns in order to express the meaning of a certain quantity of something. And these quantifiers are used with uncountable noun. Mane rakhiba, these quantifiers are used with uncountable noun to express the meaning of certain quantity or something. सर्टेन क्वांटिटी गोटे निर्धारित परिमाण को सूचैबा पई एई सब क्वांटिफायर्स कहा सहित व्यवहार होता है यस अनकाउंटेबल नाउन सहित व्यवहार होता है। वर्तमान जीवा रूल 2 इट वाज रूल 1 रूल 2 कोन 2 नंबर नियम कोन पिले we can use uncountable nouns without quantifiers in general quantity but not in any particular quantity. So why quantifiers are necessary? The question arises, sir, why quantifiers are necessary? Quantifiers काहे necessary? Quantifiers एइथिपाई necessary जे गोटे पर्टिकुलर क्वांटिटी गोटे निर्दिष्ट परिमाण व्यक्त करिबा पई क्वांटिफायर्स ता दरकार होता है। जदि जनरल सेंस रे आमे व्यवहार करूचे ताहले क्वांटिफायर्स रो आवश्यकता न थाए। ठीक अछि पिले आमे बुझी पारिले क्वांटिफायर्स काहे के लगाउ आमे गोटे निर्दिष्ट परिमाण व्यक्त करिबा पई जतबे कहू गोटे माने अनकाउंटेबल नाउन रो गोटे निर्दिष्ट परिमाण विषय जतबे कहू सेते बेले आमे व्यवहार करिथाउ क्वांटिफायर्स। जदि आमे सर्टेन अमाउंट विषय कहू ना गोटे निर्दिष्ट परिमाण विषय कहू ना ताले क्वांटिफायर्स रो आवश्यकता नहीं जनरल सेंस जतबे व्यवहार करिबा। अच्छा से नेक्स्ट एग्जांपल आमे जो जिबा रूल 3 रूल नंबर 3 नंबर रूल यूसेज नंबर 3 कौन पिले आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी आर नॉट यूज इन अनकाउंटेबल नाउन्स। मन रखिबा अनकाउंट एटा गोटे बहुत पिलांकर भूल हुए नॉर्मली जे द वाटर लिखि देबे द वाटर द मिल्क द वाटर द मिल्क ए भलिया लिखि देले कोन हे जा पिले भूल हे जीवो। तो नियमटा कौन आर्टिकल लाइक ए एंड दी आर नॉट यूज्ड in uncountable nouns कौन आर्टिकल like a and the are
not used with uncountable noun. Uncountable noun कौन हुए आम जाचे इंग्राजी रे तीन आर्टे देर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश केते आर्टिकल अच्छी तीन आर्टिकल जदि आम आर्टिकल रो नंबर विषय कहवा तीन आर्टिकल अच्छी पहले ए एन एंड दी यही तीन आर्टिकल को दुई भाग करा जाइछि नहीं कि आम समस्त जानी ए आर्टिकल जो रहा तीन आर्टिकल जो रही ए आर्टिकल दुई भाग विभक्त कौन कौन बिले गोटे है ए एन को कहा जाए इंडेफिनाइट आर्टिकल एंड दी इज योर डेफिनाइट आर्टिकल तो ये आर्टिकल उपरे गोटे स्वतंत्र क्लास आम करवा डोंट वरी आर्टिकल उपरे स्वतंत्र क्लास स्पेशल क्लास विल बी देयर डोंट वरी आज आज ये काउंटेबल अनकाउंटेबल सरी गला पर पिले आम ग्रामर को गोटे दिन बंद करिकी आम गोटे पोएम पढ़िबा तापरे आम गोटे पोएम पढ़िबा ठीक अच्छे तापरे आम जीवा आगु को अच्छा एठी मु जो कहूथली कौन आर्टिकल लाइक ए एंड दी आर नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन यार एक्सेप्शन कौन अच्छी व्हाट आर exception in some special cases mu jemti kohutili in some special cases articles are usually used in countable nouns okay exception in some special cases because articles are usually used in countable nouns karan kono why they are not used because they are used with countable noun somebody was asking me jone ke mate pacharuthila sir kahi ki lage nahi तार कारण है जे बिकॉज these articles are used before countable noun that's why these articles are not used before uncountable noun so simple so easy so but in special cases it can be used so jemti for example ame nei jiba jemti mu lekhili a pen मु लिखी कौन पिले मु लिखिली एठी ए पेन बट मु जदि एठी लिखी देबी ए राइस कोटा ठीक कोटा भूल हो पिले which one is wrong which one is right and which one is right who can tell me pen ta countable noun that's why a we can use here but here rice is uncountable noun so I mustn't write a rice yes or no so in this case a pen is the correct answer and a rice is wrong yes or no okay jiba tikke agu ku rule number 4 eta 3 number rule thila bartaman 4 number rule paku ko jiba let us see rule number 4 fourthly sometimes uncountable nouns such as milk bread water chocolate etc which are used as a means of countable nouns if it could be counted because in modern English grammar there are certain fixed expressions which are used to refer to unit of such uncountable things तो rule टा कौन पिले rule कहला sometimes uncountable nouns such as milk bread water chocolate which are used as a means of countable nouns बेले बेले as a means of countable nouns एमाने व्यवहार थामते कहीं what is the reason is that in modern English grammar what happens there are certain fixed expression किछि fixed expression अछि certain fixed expression which are used to refer to unit of such uncountable things जेमिति for example a slice of cake a slice of cake एठी कौन जो एटा this is countable like a loaf of bread एठी कौन जो एटा this is also countable yes ना आमे से भलिया नहीं जीवा ए
sheet of paper. A sheet of paper. This is also countable. 2 kg sugar. Yes, Mohan. Very good. Yes, yes. Say a pinch of salt. A pinch of salt. So these units are, when we are taking them as units, they can be come with or compared with the category of countable noun. Getting me? A jar of sugar, a pinch of salt, a cup of tea, bottle of milk, a cake of soap, a bar of chocolate, a stick of chalk, etc. Do you remember this? Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପିଲେ rule number 5. 5 number rule. 5 number ନିୟମଟା କ'ଣ? What is the rule number 5? The rule number 5 is the noun which can be counted as both countable and uncountable in the following condition. So nouns are there, they can be used as both, means countable and uncountable nouns in some condition. Condition 1. एक number condition टा कौन देखिबा वर्तमान. What is condition 1? So 1 is nouns are regarded as countable when they refer to particular objects. Rule, write down the rule. What is the rule? The rule is that nouns are regarded as countable when they refer to particular objects. गोटे निर्दिष्ट वस्तु विषय जब रेफर करते से काउंटेबल नाउन हिसाब रे निया जाए. फॉर एग्जांपल, उदाहरण स्वरूप, माय ब्रदर रोट ए पेपर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन. माय ब्रदर रोट ए पेपर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन. मो भाई गोटे पेपर लिखी को ऊपर, साउंड पोल्यूशन ऊपर. हियर ए पेपर इज कंसीडर एज काउंटेबल. सेकंड एग्जांपल, शुभेंदु बट एन आयरन yesterday. शुभेंदु बट एन आयरन yesterday. आयरन कहले कौन पिले? स्त्री बोली आम जो कौच. बट एन आयरन, बट आयरन कहले लुहा. तो एटी बट एन आयरन को हिसाब रे गोटे ऑब्जेक्ट को आम कहूचे, गोटे ऑब्जेक्ट विषय आम कहूचे, माने से आमर जो आयरन ये रोचे, स्त्री पेड़ी रोचे, ता विषय आम कहूचे एटी. थर्ड एग्जांपल आम देखिबा. सो एटा थिला rule number 1. Rule number 2 कौन? What is rule number 2? The rule number 2 is there. Nouns are regarded as countable when they refer to some material or substances. Regarded as countable when they refer to some material or substances. Material or substances. Jemti newspaper are printed on papers. Look at this. Newspaper are printed on papers. Newspaper paper ऊपर paper रे print हुए. तो एठी कहला पेपर्स टा को हमें गोटे सब्सटेंस करके नहीं छु, गोटे मटेरियल करके नहीं छु. That's why here it is used as countable noun. Again you can say iron is stronger than steel. Iron is stronger than steel. Iron is, that means it is used as singular here. Yes or no? So here they are also taken as substances. Then rule number 6. एटा थिला दुईटा रूल. जते आमे सम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल भलिया के भली व्यवहार करिबा. 6 नंबर रूल कोन कहे? व्हाट इज द रूल नंबर 6? Some countable nouns can be used in special cases, a countable nouns without any change in meaning. Okay, so what is that rule? Suppose look at this. Tea is grown in Darjeeling. Tea is grown in Darjeeling. So here what happens? Tea is used as what? The subject is singular here. Singular. That means we can, we are able to count here. It is taken as a whole thing, you can say. Then this shop sells teas from different parts of India. दुईटा एग्जांपल मनौछि. This shop sells teas. This shop sells teas. मु कौन कहली बिले? एटी टी लिखिछि, एटी टीज लिखिछि, माने एटी सिंगुलर करछि या को प्लुरल करछि, माने काउंटेबल अनकाउंटेबल करि परछु. I can change it. Yes or no? I can change it.
So in these special cases, these are some special cases in which we can use the countable noun, uncountable noun as countable. These are some special cases. Okay, let's see rule number 7. Rule number 7, what is rule number 7? Word which refer to food or drinks, mane rakhiba, word which refer to food or drinks, खाद्य किंबा पानीय, food or drinks, कौन हम जमती फॉर एग्जांपल मिल्क, राइस, टी एटसेट्रा, मिल्क, राइस, टी एटसेट्रा आर ऑर्डिनरीली यूज एज अनकाउंटेबल नाउन, मन रखिबा आर साधारण साधारण भावे एमाने अनकाउंटेबल नाउन भाव रे व्यवहार होंती को कोटा पिले जेमती माने एडिबल थिंग्स लाइक मिल्क, राइस, टी एटसेट्रा रेफर टू फूड, जो माने फूड सहित संपर्क रखते. But we often use them, use these nouns as countables when ordering food or drink in a restaurant or hotel. किंतु यही खाद्य गुड़ी को जेते बेले रेस्टोरेंट किंबा होटल रे आमे ऑर्डर करूछु, we use them as singular, or you can say we use them as countable noun. से मान को countable noun हिसाब रे व्यवहार करि थाउ. For example, उदाहरण स्वरूप, Ram drinks tea in the morning and in the evening. Then second example, I am always fond of rice and milk. Rice and milk. Yes or no? So here what happens? The words are countable nouns because they refer to substances. But please get me one tea. If I'll tell, please get me one tea. Suppose I am inside a restaurant. मु गोटे रेस्टोरेंट रे अछि. से जगह रे मु कहू छी प्लीज गेट मी वन टी, गिव मी वन टी. एटी वन टी माने मु कोन करछि बिले मु ताकू काउंटेबल करिकि व्यवहार करूछि, काउंटेबल करिकि व्यवहार करूछि. से भलिया रूल नंबर 8 जल्दी सारिबा पिले, समय कम अछि. रूल नंबर 8 कोन कहूछि बिले, एटली द क्वांटिफायर्स लाइक मच एंड मेनी आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. मने रखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्लास, मच एंड मेनी आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. मच एंड मेनी, मच मेनी कहाँ सहित व्यवहार हे माने नेगेटिव आउ इंट्रोगेटिव रे व्यवहार होंती. मच एंड मेनी, दीज आर यूज विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, whereas much and many are used in negative and interrogative. Here much is used before uncountable nouns and generally many is used with plural nouns. Much is used with uncountable noun, many is used with plural noun. मन रखिबा कोन, much is used with uncountable noun and many is used with countable noun. मोरैला much टा uncountable noun and many टा countable noun सहित व्यवहार हबो. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दुईटा केस रे. Is there much water in the pond? For example, is there much water in the pond? Like if we'll go to second example, we don't find much time to finish our homework. Look at this example. Then Nargis have not many books. Then does Mr. Pradhan has many books in his home? These are some example. Rule number 9. Last rule. तापर सारी बापिले. Last rule टा कोना? Similarly, the other quantifiers like a lot of, lots of, few, a few, little, a little, etc. are used in the following condition. What are those conditions? So, what are those? Similarly, the other quantifiers like a lot of, lots of, few, a few, little, a little are used. Whatever condition I'm going to tell you now. First thing, mone rakhiba, a lot of and lots of. A lot of and lots of. A lot of and lots of are always used in positive or affirmative sentences. Lot of, a lot of. केतले व्यवहार हबो? Positive, affirmative sentence रे व्यवहार हबो. Both as countable and uncountable nouns. आउ countable, uncountable नाम दुईटा जाक नाउन लागि व्यवहार हबो. Then for example, आमे देखि परबा example. A lot of people want new device of everything at present.
Option question number example number B. Example number B is my brother has a bike which eats a lot of petrol. Example number C, I drink lots of water every day. These are the example. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା little and a little. Little and a little. Little and a little can be used with quantity. Little and a little are used with quantity, whereas few and a few can be used with plural countable nouns referring to number. मन रहा लिटिल ए लिटिल टा क्वांटिटी पाई परिमाण पाई व्यवहार हुए. फ्यू एंड ए फ्यू यूज विथ व्हाट प्लूरल काउंटेबल नाउन्स रेफरिंग टू नंबर. जब बेले कौन सी गोटे नंबर विषय आम कहूबा प्लूरल काउंटेबल नाउन विषय आगे कौन लगे फ्यू एंड ए फ्यू. लिटिल क्वांटिटी लगे व्यवहार हुए. ए लट ऑफ आम आगु पढ़ी सारी. सो पिले दिस इज ऑल अबाउट योर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. एतिकी थिला तमर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन विषय पाठ जो तुम इनविटेशन कौन अच्छी इनविटेशन 4 रे थिला. आम आसंता काली आ गोटे कौन प्रोज पढ़ा ना पोएम पढ़ा पिले व्हाट शुड यू स्टडी कौन पढ़ाई इंटरेस्टेड तुम प्रोज ना पोएम. प्रोज पढ़ ना पोएम पढ़ आसंता काली व्हिच वन पोएम. ओके व्हिच पोएम रमर टेल मी व्हिच पोएम. आसंता काली को पोएम पढ़ा पिले टू माय ट्रू फ्रेंड. Okay, that much for the day. To my two friend पढ़ी वाकली. Okay, see you in the class tomorrow. Bye bye.